सोनाली फ्रॉम मुंबई फूड चैनल और मैं आई हूँ येस पिज़्ज़ा में, जो कि लोकेटेड है मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे। और यहाँ पे मिलता है ATM पिज़्ज़ा, जो कि बनता है मशीन में से डायरेक्टली बनकर आ जाता है 5 मिनट में। तो मैं देखने वाली हूँ कि ये बनता कैसे है और आपको भी दिखाने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे मशीन्स है, जो कि जूस की मशीन है, फ्रेंच फ्राइज़ की मशीन है, तो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। उन्होंने ये पेमेंट के बाद मुझे ये टोकन दिया है, तो ये टोकन मुझे इस मशीन में डालना होगा, तो अभी ये प्रोसेस चालू होगा। तो ये आप कॉइन देख सकते हैं, तो ये इसमें डाला जाता है और फिर यहाँ से वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। सो गाइज़, मैं कॉइन डालने के बाद ही ये स्टॉपवॉच चालू कर दूँगी, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगी कि ये कितने टाइम में बनता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं टोकन डाल रही हूँ और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये मैंने एक्जॉटिक पनीर चूज़ किया है, तो यहाँ पे ये लाइट चालू हो गई है। तो ये डो है जो नीचे आ गया है अभी, और ये पानी के साथ अभी बनना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कि डो बनके हो गया है और वो इसके बाद नीचे जाएगा। 10.5 इंच का वो बन जाएगा उसका लेयर बेस। सो यू कैन सी द डो इज देयर। अभी वो 10.5 इंच का बेस बन जाएगा। अभी वो डो का बेस है जो वो पीछे चला गया है फॉर द टॉपिंग्स। पीछे इनका रेफ्रिजरेटर है, तो वो वहाँ पे टॉपिंग्स होने के बाद वो सीधा यहाँ पे माइक्रोवेव करने आ जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे टॉपिंग्स होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2.5 मिनट्स के लिए यहाँ पे बेक होगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा डिलीवरी के लिए। तो अभी हुए हैं, आप टाइम देख सकते हैं। You can come in and see. The pizza will come any time now. Okay, the pizza is come now. आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा आ चुका है, उसके ऊपर पूरी टॉपिंग्स बन चुकी है और ये अभी बेक होना चालू हो गया है। अभी इसकी लाइट बंद हो चुकी है और ये अभी नीचे से पिज़्ज़ा अपना आ जाएगा कभी भी। देख सकते हैं मेरा पिज़्ज़ा आ गया है और मैंने ये स्टॉप वॉच अभी बंद किया, तो इन्होंने दावा किया था कि ये 5 मिनट में हो जाएगा, बट कोई नहीं, 6 मिनट के बाद हो गया है हमारा पिज़्ज़ा।
कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं ये कैसा है। तो मैं पहले थोड़े से हर्ब्स डाल लूँ इसके ऊपर भी। सम चिली फ्लेक्स। मुझे तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। So let's try. The taste is nice. The base is crisp and thin. बहुत बड़े क्यूब्स के उन्होंने पनीर डाले हैं, वेजीज है, ऊपर से चीज़, लिक्विड चीज़ डाला है। The taste is amazing. The time is less. का प्रोसेस भी सेम ही है फ्रेंच फ्राइज़ का। यहाँ से आपको टोकन डालना पड़ता है, पहले कूपन लेके, फिर कूपन डालने के बाद 2.5 मिनट्स में फ्रेंच फ्राइज़ रेडी होके यहाँ से आपको बजर बजेगा और यहाँ पे वो आ जाएंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। शुगरकेन जूस भी पी लिया है। तो आपको भी कभी मुंबई सेंट्रल में आने का मन करे तो ये जगह बिल्कुल विज़िट करना। और 5 मिनट में पिज़्ज़ा मिल रहा है, 2.5 मिनट्स में फ्राइज़ मिल रहा है, 1 मिनट में शुगरकेन जूस मिल रहा है, और क्या चाहिए। सो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको और कौन सी प्लेसेस जानी है, देखनी है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट्स इट फॉर ऑल, दिस मनाली साइनिंग ऑफ फ्रॉम फूड चैनल।